Okay, my voice is loud and clear. Okay. So I have already uploaded the pre-recorded session of our last part. Okay. अगर आपको प्रीवियस लिंक मिला होगा लेक्चर्स का तो वहीं पे भी आपको लेटेस्ट लिंक भी आया होगा. यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे यू विल गेट द फोर्थ लेक्चर. ओके. एंड जो लास्ट पार्ट था प्लान्स का, इट इज ऑलरेडी अपलोडेड देयर. सो फ्रॉम टुडे वी कैन स्टार्ट विथ आवर न्यू चैप्टर. ओके. अगर किसी को वो वहाँ पे कुछ डाउट है तो मुझे डाउट सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे उसको. बट यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके. Everyone can see the presentation? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. So we'll start with our second chapter, Unit 2, Strategy Formulation. Okay. So can anyone just put some light on what we have studied on our previous chapter? हमने previous chapter में क्या किया था? Anyone can just put some light. What is strategic management? Anyone just can just tell what is strategic management? No? किसी को याद भी कैसा होगा? ऑनलाइन लेक्चर है, डिफिकल्ट नेटवर्क का इशू, राइट? क्लास के लेक्चर याद नहीं रहते सर, यहाँ का लेक्चर कैसे याद रहेगा? कैन एनीवन जस्ट पुट सम लाइट व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस यूनिट? ओके, चलो. तो वी स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर, strategy formulation. Okay, every business most importantly has to work. Okay, the main motto of every business is to make sure that they make good amount of profit. Okay, यही होता है ना हर बिजनेस का मोटो कि नहीं? क्या होता है बिजनेस का मोटो? Every business has some motto. What is that motto? Anyone can tell? My voice is loud and clear. सुनाई दे रहा है सबको कि नहीं सुनाई दे रहा है? Yes, sir. सुनाई दे रहा है. हाँ तो रिस्पॉन्ड तो करो फिर. अरे सर मैसेज पे कर रहे हैं काफी लोग. अच्छा, मैसेज पे कर रहे हैं तो बोलो ना मैसेज पे क्या है? To earn profit. Okay, good. And they make sure that there's always a better growth and development of an organization. ये हर कंपनी का मोटो होता है, right? So in first chapter we have seen what do you mean by strategic management. Okay, the basic concept of strategic management. Then the entire chapter has focused on the organization's mission, vision part, objectives. Okay, the entire chapter has seen that ki humko being an organization, being an company, the most important part of a company is to form the vision statement, the mission statement. Is always the various kinds of objectives needs to be formed by the organizations. Objectives helps the organizations to reach towards their goals. जितने भी आपके objectives होंगे, there would be 4 objectives, 5 objectives, 10 objectives. It will be monthly, quarterly, half yearly, yearly. जो भी उनका objectives लोग form करते हैं, वो objectives को achieve करने की पूरी कोशिश करते हैं. And once the objectives is achieved, the whatever goals are set, it is automatically got achieved. So mission statement is formed by the organization. It is only for a short period of time. Wherever the vision statement of an organization, it is always for a long period of time. So this is the basic concept we have studied in unit 1. In second unit, we'll see the strategy formulation.
नाउ हमने स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसका पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने यूनिट 1 में पढ़ा था. इन यूनिट 2 स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट वी विल स्टडी. Strategy formulation is one of the creative part of an organization which has some sequence of action. Okay, a sequence of action is conducted by the company. हमने प्रीवियस चैप्टर में एक सी ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाता है, बट इन दिस चैप्टर we'll need to understand how to implement that entire strategies into the organization. स्ट्रेटेजी बनाना है हमको, यहाँ पे पेपर पे था, अभी हमको यहाँ पे प्रैक्टिकली उसको फॉर्म करना पड़ेगा, और वो फॉर्म करने के बाद वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन अ मार्केट. For that, there are several steps, several procedures, or several sequence that needs to be followed by the organizations. Okay, so strategy formulation is most important concept for organizations. They need to understand the business environmental situation. In this chapter, we'll entirely study the environmental factor. No, environmental factor का मतलब not the environmental management. सन, मून या फोटोसिंथेसिस या ट्रीज, ऐसा वाला नहीं. टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट विल सी. Okay, the business environment. What is business environment? The entire internal environment, external environment, the customers, the supplier, the competitors, okay, the stakeholder, the shareholders, political factor, economical factor, social factor, legal factor, technological factor, cultural factor, ecological factors. Everything we study from a business perspectives. That is more important. For that, every business needs to understand what the business, where the business is going on, what will be the future of the business, what kind of study, what kind of information the company needs to find out to make the strategy. अगर किसी भी कंपनी को स्ट्रेटेजी बनाना होता है, स्ट्रेटेजी फॉर्म करना होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे नीड टू कलेक्ट गुड अमाउंट ऑफ डेटा, गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. उसके बेसिस पे they can easily do good amount of environmental scanning. Okay, so this is the basic information of this chapter. Now I'll go towards the presentation. Okay, this is the introduction part of the second chapter. Okay, strategy formulation is a creative and analytical process because functions are performed in a sequence. Strategy formulation is concerned with development of an organization mission, objectives, strategies, and policies. Despite you go in any of the organizations, whenever strategies are formed, strategies are made, the mission statement, the vision statement, the objectives of the companies will come across. आपको आपके कंपनी का जो भी टारगेट होगा, जो भी मिशन होगा, विजन होगा, it requires good amount of strategies. Including with your strategies, you required policies formed by the organizations. Now, what is policies? The policies is none other than the rules and regulations, the discipline, the manners which the organization is following into the organizations. Strategy formulation involves performing the environmental and organizational appraisal. Strategy formulation develop line of action covering the various activities of the company in the light of business objectives. In order to formulate an effective strategy, manager must analyze the organization's competitive position. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी तरह का स्ट्रेटेजी फॉर्म करने की कोशिश करता है या स्ट्रेटेजी फॉर्म करता है, उनको उसकी उन लोग की सबसे पहले they need to find out where they stand in a market. Are they the competitors? They are the leaders. Okay, they are the followers. They are the huge, the biggest competitors of the other organization. They need to find out their position. अगर आप ऑलरेडी एक लीडर हो मार्केट में, तो यू हैव टू बी मोर स्ट्रेटेजाइज, यू टू बी शार्प इनफ टू एनालाइज द मार्केट, टू स्टडी द मार्केट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट you can get good amount of information. Okay, then it is a flexible, creative, intuitive, and adaptive. It does not work on the basis of a fixed program. Very much truly said. Whenever
the strategies are formulated in an organization, it is most importantly should be flexible enough. ऐसा नहीं कि आपने कुछ प्लानिंग किया और वो प्लानिंग के हिसाब से जाएगा. It cannot be a rigid program. अगर फिक्स प्रोग्राम के हिसाब से चलोगे तो कभी भी आपका स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा. Importantly, whenever you make strategies into the organization, it should be flexible enough. अगर मार्केट सिचुएशन चेंज होते हैं तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको आपका स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा. इट शुड बी क्रिएटिव. You need to find out a creative way or an innovative way to do good amount of strategy formulation. Nowadays, just having capital, having man force with you, having good amount of resources will won't work. You need to be different. You need to be extraordinary. जब तक आप extraordinary नहीं रहोगे, तब तक आपका strategy काम नहीं करेगा. Intuitive मतलब क्या होता है? You should be focused. You should have that sixth sense. हर एक लोगों को सिक्स सेंस होता है. देयर आर मेनी पीपल्स हु कैन जज द फ्यूचर. ओके, जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं, दे डू गुड अमाउंट्स ऑफ जजिंग. दे गेस कि हाँ मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, प्राइस उतरेगा, पैसा बढ़ेगा, पैसा कम होगा, रेट बढ़ेगा, रेट कम होगा. दिस इज कॉल्ड योर इंट्यूटिव, द सिक्स सेंस यू हैव. ओके, यू हैव द इंट्यूशंस. एक आपकी मन की बात होती है, मन की बात में मालूम पड़ता है कि बाबा might be this product will not work right now, but it will surely work after 6 months. This is not the right time to launch a product. This is not the right time to implement the strategies of an organization. So this is the intuition which comes from the mind of an employee. So again, this is also a factor which is taken into consideration. Adaptive is something like you need to adapt the changes which happens in a market. You have to change yourself whenever the market gets changes, the environment will get changes. So it will not work on a fixed program. You cannot work on a rigid basis. Okay, so there are various steps are there in strategy formulation. First, you have to define the company's objective. So company's objectives is one of the most important part. हमने पूरे previous chapter में यही पढ़ा है. To form the vision statement, the mission statement, the objective, the goals of an organization. Without objectives, the company cannot achieve their goals. For example, अगर आप लोग का objective है कि coming quarter में you need to reach at least 25%. You have to increase your production by 25%. You have to earn a profit by 25%. Or you need to achieve a targets in terms of quantity or units. ये 10,000 प्रोडक्शन, हम 10,000 प्रोडक्ट्स हमको बनाना है कमिंग क्वार्टर में, ओके 5,000 हमको बनाना है महीने में, 2 हफ्ते में. So this is the objectives of an organization. So whenever you are trying to make the strategy formulation, the most important part and the first important part is to do the objectives. आप भी एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, you also have good amount of focus, you have some objective in life. You want to become a successful entrepreneur. Might be there are many students who want to become an entrepreneur. तो आप लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट समझ में आए, जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूचर में. You want to become a management trainee, you want to see yourself as a management person in one of the MNCs. So you have some objectives in life. So अगर objectives आपका set होगा तो objective के basis पे ही आपका strategies बनता है. Strategies is none other than your plan. Okay. Second, you have to analyze the environment. Now environment का मतलब होता है to understand the internal environment and your external environment. ये चैप्टर में you will always will see the word environment again and again. Previous chapter में हमको एक word आता था हमेशा, the vision, the mission, the objectives, the goals of the organization. यहाँ पे आपको environment ये वाला word बार बार repeat होगा. To analyze the environment का basic concept होता है to understand the internal environment and to understand the external environment. Now, what is internal environment? Internal environment is nothing than your customers, your suppliers, your contractors, your employees, your shareholders, stakeholders, society. ये सारे चीज आपके internal environment के अंदर आते हैं.
and most importantly this internal environment can be easily handled. ये आपके कंट्रोल में होता है. But when you talk about the external environment are your political factors, economical factors, social factors, technological factors, cultural factors, legal factors. ये सारे आपके कंट्रोल के बाहर है, कंपनीज के कंट्रोल के बाहर है. पॉलिटिकल सिनेरियो कभी भी रातों रात बदल सकती है, चेंज हो सकती है. ओके, अभी आपने जो हमारा जो करंट गवर्नमेंट है, ओके, पहला इन लोग का बीजेपी का और राष्ट्रवादी का अलायंस हुआ था. देन अनफॉर्चुनेटली वो एक ही रात में बदल गया एंड थ्री डिफरेंट पार्टीज टुक प्लेस. तो शिवसेना, कांग्रेस एंड एनसीपी अगेन joined their hands and they formed the government. So political factors is out of the control of an organization. सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. ये आपको लग रहा है कि कंपनी के हाथ में होता है, बट इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कंट्री का इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी किसी के हाथ में नहीं होता है. जितना हम लोग जितना हम लोग माल एक्सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा खासा पैसा कंट्री के अंदर आएगा. सो इट इज अगेन द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टेक्नोलॉजिकल पार्ट, हर दिन हर घंटे आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज होते रहता है. The new technologies are coming into the market. Organization has to adapt themselves. They have to make sure that whatever change is happening into the organization, they need to adapt the new technological part. And they have to make sure that कि जो नए मशीनरीज आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में इंस्टॉल करें, which helps the organizations to reduce the time and increase the production. This is the main purpose. सो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजी बनाने से पहले उनको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है. ओके, थर्ड, यू हैव टू डिटरमाइन द क्वांटिटेटिव टारगेट्स. एज आई सेड अर्लियर, क्वांटिटेटिव टारगेट्स का मतलब होता है द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक श्योर दैट दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. वो एक आपका नंबर होगा. इट विल बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. ओके, यूनिट्स हमको बढ़ाने हैं. फॉर एग्जांपल, वी आर द मैन्युफैक्चर ऑफ द लैपटॉप्स, सो वी आर हैविंग अ टारगेट फॉर कमिंग क्वार्टर्स. 3 महीने में हम लोग 10,000 से 15,000 लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे. दिस इज द क्वांटिटेटिव टारगेट. दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव टारगेट, दिस इज अ क्वांटिटेटिव टारगेट कि हमको 10,000 से लेके 15,000 तक का लैपटॉप मैन्युफैक्चर करके कोशिश करना है. सो स्ट्रैटेजी हम लोग अगर बनाएंगे या सोचेंगे बनाने के लिए, तो ऐसे बनाएंगे कि हम लोग 10,000 लैपटॉप से 15,000 लैपटॉप तक हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर सकें. तो स्ट्रैटेजी वुड बी दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, दे विल गिव द ओवरटाइम फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज. नाइट शिफ्ट के लिए, लेट नाइट के लिए पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज होगा, कैंटीन फैसिलिटीज वहां पे देंगे. अगर लेडीज वर्किंग है या वुमेन्स वर्किंग है तो उनके सेफ्टी के लिए हमको क्या करना है. तो देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर formulating the strategies for the company. Then fourth, you have to link with the functional plans. Now what are the functional plans? The functional departments are your research and research and development department, marketing department, sales department, HR department, finance department, logistics department, warehouse, maintenance department, electrical department. ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो एक साथ में काम करते हैं. Whenever strategies are formed by the organizations, it is most importantly that you need to consider the functional departments. जो भी स्ट्रैटेजी बनाओगे कंपनीज में, वो सारे स्ट्रैटेजीज को आपके आपके कंपनीज में आपको वहां पे सारे डिपार्टमेंट को कंसिडर करने के बाद ही आपको वहां पे implement करना. You cannot just implement the strategies in isolation. आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाया वो अलग होगा, फाइनेंस का स्ट्रैटेजी बनाया वो अलग होगा, नहीं. You need to form a strategy in entire, in comprehensive, as a whole. You need to link कि एचआर का स्ट्रैटेजी क्या होगा, फाइनेंस का क्या होगा, कितने मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, मार्केटिंग कैसे करेंगे, कैनवासिंग कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, हाउ मच मनी वी नीड टू पुट फॉर प्रोडक्शन,
how much money we need to put on advertisement, how much money we need to give to employees, ओवर टाइम हम लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका सारा स्ट्रेटेजी हमको हर एक डिपार्टमेंट से करना पड़ेगा. दिस इज ऑल लिंक्ड विद द फंक्शनल प्लान. Okay, then you have to conduct the performance analysis. Performance analysis का मतलब होता है कंपनी हर बार अपना जो स्ट्रेटेजी बनाता है वो स्ट्रेटेजी डिजायर एंड एक्चुअल इसके बेसिस पे बनाता है कि व्हाट इज आवर डिजायर. फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि बाबा 10,000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हमारा प्रीवियस क्वार्टर का ये टारगेट था, but unfortunately due to some of the other reason company could not able to reach that target. They have reached till around 7,500 का target. So हमारा desire goal था 10,000 quantity, but actual we have reached till 7,500 or 8,000. So 2,000 2,500 का हम लोग का वो gap है. So depend on your previous strategies, you need to adapt, you need to make the changes. Whatever mistakes you have made earlier will not repeat the same mistakes again. जो हमने पहला गलती किया था वो हम लोग वही गलती नहीं दोहराएंगे, हम लोग उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे. So they conduct the performance analysis, what is actually happened earlier and what we need to do now, so we can achieve that 10,000 plus quantity, the 10,000 plus का production easily. So strategies are formed on the basis of the performance analysis of your previous strategies. जो हमने पहला strategy बनाया था उसको भी कंसिडर करते हैं, और हमारा डिजायर गोल क्या था और हमारा एक्चुअल गोल क्या होगा, ये सारे चीज को हम लोग कंसिडर करने के बाद हमारा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं. ओके, then the last is to make the right choice of strategy. Company whenever forms a strategy, they do not make a single strategy. उनके पास almost 4 to 5 different strategies होते हैं, and by analyzing the environment, by understanding the objectives, by considering the quantitative target, understanding the various functional departments, the understanding the previous performance of an organization, after analyzing everything, they make the right choice of a strategy कि ये strategy हमको लेना चाहिए, ये strategy हम लोग implement कर सकते हैं. So they have a plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, या plan F. Might be they have almost 5 to 7 strategies, but in that 5 to 7 strategies, which is the best strategies can be utilized for the organization, which strategy will help the company to have a growth, which strategy can be successfully utilized in an organization. ये उसका right strategy का choice होता है. Understood the 6 points, the steps in strategy formulation? Any doubt in this? Easy to understand? Yes, sir. Easy to understand. Okay, cool. So we'll move forward to the environmental analysis. So environmental analysis is entirely a new concept you have here. Okay, environmental analysis हमने अभी just उसको एक glance किया या हमने उसको पढ़ा कि environmental analysis exactly क्या होता है. Environmental analysis is nothing but just studying the entire business environment. We need to identify the strengths, the weaknesses, the opportunities and the threats of the business. जो आपका business है उसका सारा strength क्या है, आपके कंपनी का strength क्या है, आपके कंपनी का weaknesses क्या है, आपके पास right now क्या opportunities है, and what are the various threats you have, who are your competitors. Entire study, entire information you needs to be covered in a proper way. Environmental analysis is a process by which organizations keep track of a relevant environment in order to identify opportunities and threats influencing in their business. Now, if I am a Samsung company, मेरे पास Samsung company है, तो मेरा सबसे बड़ा strength है I have a brand name. मेरे कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा कि मेरा ब्रांड नेम है, अच्छा खासा पैसा है, मेरे पास अच्छे खासे वैरायटीज के फोन है जो मार्केट में अच्छे से चल रहे हैं. दिस इज आवर स्ट्रेंथ. वीकनेसेस,
Weaknesses would be the life of the phone is not good. Okay, people still go for other brands. Screen या body का जो shape है या function है, phone hang हो रहा है बार बार. This is motherboard का थोड़ा issue आ रहा है. So small weakness is always there for the organizations. Opportunities क्या है? You really has a good research and development department. आपके पास अच्छा खासा R&D department है. You have high technological machineries installed in your organization. उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो करंटली यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू गुड अमाउंट ऑफ दिवाली धमाका. अभी दिवाली नजदीक है, 10 दिन पे दिवाली है. यू कैन सेल द फोन्स लाइक एनीथिंग. दिस इज द राइट टाइम. यू कैन लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, यू कैन लॉन्च अ न्यू फोन. अगर सैमसंग को लग रहा है कि हमको लैपटॉप लॉन्च करना है या टीवी लॉन्च करना है, तो दिस इज द राइट टाइम. Because people nowadays coming out of their homes, they are purchasing new things for their home because Diwali sar pe hai. So this is the right time for the organizations to go for. Threats are something like they have a huge competition in the market. उनके प्राइस के रेंज पे you can get a good amount of phones of other brand. अगर सैमसंग 20,000 में आपको फोन दे रहा है विथ ऑल द फीचर, फॉर एग्जांपल 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 20 मेगापिक्सल रेयर कैमरा, 5.6 इंच का स्क्रीन, 4 GB रैम, मदरबोर्ड, स्पेस, 64 GB स्पेस वगैरह सब कुछ अगर दे रहा है, तो वही सारे फीचर्स आपको रियलमी या ओप्पो, वीवो, ओके, अदर ब्रांड में आपको 12,000, 14,000, 15,000 में भी मिल रहा है. So customer always understands. Customer go and review on internet. They compare the product. They understand कि exactly हमारा जो features है product का हम किसी और product से match करें, compare करें, और compare करने के बाद which is the best phone we can purchase with respect to money, with respect to durability, with respect to features and characteristics. Everything the customer understand, analyze, and they purchase the phone. तो वो भी उनके लिए थ्रेट है. Environmental information inputs can be obtained from forecasting, MIS, that is Management Information System, written information, newspapers, reports, journals, audio visuals reports, sales personals and competitors. जो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको एक फोरकास्टिंग से मिल सकते हैं. यू कैन जस्ट फोरकास्ट, यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट. Okay, you have good amount of Excel report, you have an MIS report available with the organization, and numbers of written information you can find. अगर आपके पास right source है तो आप अच्छा खासा written information collect कर सकते हो. Newspaper, go and purchase Economic Times. Economic Times आप purchase करोगे तो उसमें और कुछ न्यूज़ नहीं होता है, only business के न्यूज़ होती है, economics related न्यूज़ होते हैं कि what is the current situations of economics, what is the how the market is playing, which company is performing well. Go and purchase Economic Times या आपके पास स्मार्टफोन सबके पास है, Economic Times ई पेपर डाउनलोड करके पढ़ो. You will not find any other information rather than business. There are various magazines are there, various journals are there who just publish the various business related informations, how the strategies are formed, how the company has performing in the market, उनका share rates क्या है market में, उनके अगला strategies एक tentative अगला strategies क्या होगा, everything they do. ऑडियो विजुअल रिपोर्ट्स भी वहां पे रहते हैं. सबसे बेहतरीन, सबसे व्हाट यू से a perfect information can be get from a sales personnel, the person who actually do the sales and marketing of an organization product and services. उससे आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. एंड अगर वो कॉम्पिटिटर कंपनी का होगा तो आपकी कंपनी के तो मस्त की एकदम चांदी लग गई, बिकॉज ही विल गिव यू ऑल द स्ट्रेटेजीज, ही विल सप्लाई गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के स्ट्रेटेजीज फॉर्म करते हैं, हाउ दे अट्रैक्ट द कस्टमर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, what kind of new schemes they do for to attracting more number of customers towards their organizations. So these are the things, these are the ways you can collect good amount of information. It has three features.
okay, of environmental analysis. Holistic exercise, it is a continuous process and exploratory process. What is holistic exercise? Anyone can just tell? होलिस्टिक नाम सुना है कभी इसके पहले? No, sir. No. Anyone can just try. So holistic means एक पूरा like as a whole जो बोलते that means holistic. So holistic Yes. exercise as a As whole a whole. together. Right, right, perfect. होलिस्टिक का मतलब होता है to study the entire market, the whole market. It is a bigger exercise for the organization. अगर आपको market study करना है या environment and business environment analyze करना है तो पूरा environment आपको separately study करना पड़ेगा. You cannot just study one concept. आप एक कोई कॉन्सेप्ट लेके उसको स्टडी करके आपको आंसर नहीं मिलेगा. यू नीड टू एनालाइज everything. You need to collect the data. You need to find out what are the various issues and challenges are currently available in the market. What are the competitors are doing in the market? What are their strategies? How they will attract to the customers? How they are doing? अभी आप लोग देखते हैं टीवी पे हार्पिक का एड आता है, अक्षय कुमार वहां पे हार्पिक लेके पहुंच जाता है कहीं पे भी घर पे. ओके, अर्लियर व्हेन द फर्स्ट एड वाज केम, द फर्स्ट एड वाज जस्ट नॉर्मल, किसी स्टूडियो में वो लोगों ने प्ले किया होगा, ठीक है, हार्पिक है, अच्छा ब्रांड है, सारी गंदगी दूर करता है, बट दैट वुड नॉट बी मोर इफेक्टिव. नाउ दे हैव चेंज द स्ट्रेटेजी स्लोली एंड ग्रेजुअली. वो लोग क्या करते हैं, अभी डायरेक्टली घर पहुंच जाते हैं, घर के डायरेक्टली जो भी आपका वॉशरूम होगा वॉशरूम में दिखाएंगे, वॉशरूम क्लीन होंगे, 99.9% कम कर रहा है. नाउ सी changes of the business strategies. Okay, whenever you say कि situations बदलते हैं, now go and just check with the advertisement. For example, Lysol हुआ, Harpic हुआ, Lifebuoy हुआ, Dettol हुआ, ये सारे साबुन के ऐड के बाद आपको आखिर में दिखाया जाएगा कि ये कोविड के 99.99% जम्स किल करते हैं. इसके पहले तो सेम साबुन था, सेम फीचर्स थे, सेम इंग्रेडिएंट्स थे, तभी कोविड का तो कुछ मारा नहीं. अगर सब लोग साबुन से ही नहा के अगर कोविड मरता था तो इतना कुछ तमाशा ही नहीं होता था ना, इतने लोग मरते ही नहीं थे. बट इट इज जस्ट अ बिजनेस स्ट्रेटेजीज कि अगर हाँ आप हमारा साबुन यूटिलाइज करते हो, हमारा फिनेल यूटिलाइज करते हो या हार्पिक यूटिलाइज करते हो तो ये कोविड के 99.99 जर्म्स मारता है. दिस इज ऑल बिजनेस स्ट्रेटेजीज फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन. आप यू कैन चेक ऑन टीवी, आप दिन भर टीवी देख सकते हो, टीवी में आपको ऐड आएगा. इसके बाद तो कभी कोविड का नाम नहीं लिया लोग ने कि कोविड के जम्स थे, उनको पता ही नहीं कि कोविड नाम का कोई डिसीज भी है करके. अभी जस्ट मार्केट बूम हो रहा है, उसको चिपका दिया हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि लाइफ बॉय हो जाए या आपका डेटॉल हो जाए, लाइजॉल हो जाए या हार्पिक हो जाए, सारे जम्स किल करते हैं. तो अच्छा है, दिस इज ऑल मार्केट स्ट्रेटेजीज. सो you need to understand the market and the entire as a whole. Okay, you need to make sure that कि जो जो आपके पास threats है, आपके this is opportunity for them to increase the sale. This is the best opportunity. इसको आप अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो बिकॉज ऑलरेडी कोविड का इतना भयानक सिचुएशन चल रहा है इंडिया में, एंड यू आर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनेल एंड यू हैव द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्पिक, तो आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो आपके सेल्स के लिए. अभी इतना दिन से टिश्यू पेपर हो जाए या ग्लोव्स हो जाए या सैनिटाइजर तो किसी ने बहुत रेयरली यूटिलाइज किया होगा, बट फ्रॉम लास्ट 7 to 8 months none other business rather than sanitizer और gloves and mask इतना कमाया इन लोग ने, जो ब्रांड मार्केट में कभी देखा भी नहीं था वो लोग ने भी मार्केट में उतर गए. दे आर प्रिपेयरिंग सैनिटाइजर्स. So this is an opportunity. Those people who are working on a chemical organization, this was their opportunity to earn profit. They have earned like anything. मतलब बिस्किट से भी उन्होंने ज्यादा कमा लिया पैसा. So this is how they understand the market. This is how they study the market. That is said to be in your holistic exercise. Second, it is a continuous process. See, strategy formulation is more importantly, it is not a one-day program. कि एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, काम खत्म. नो, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके,
जैसे अगर आपके पास फाइनेंशियल एनालिसिस का कोई डेजिग्नेशन है या ओपनिंग है, so the work of that financial analyst ka is that you need to do scanning, you need to study the market, you have to understand the market, what is happening in a market, you have to keep a track on, you have to monitor the market, you have to study the market, what is happening in a market with respect to finance. Okay, is the money going up, is the money going down, should we go do acquisition, should we join hand with the organization, that needs to be do, that needs to be understand. Okay, अगर आप लोग ने मोबाइल कंपनी की बात की तो देयर आर ओनली टू बिगर प्लेयर्स यू कैन सी। पहले तो 4 या 5 थे, अभी तो सबसे 2 बड़े प्लेयर हो गए, वो जियो और एयरटेल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगेस्ट प्लेयर जो इंडिपेंडेंटली फाइट कर रहे हैं मार्केट में। वोडाफोन बेचारा तो हार गया एंड आइडिया भी हार गया। तो दोनों जो हारे कंपनीज हैं उन्होंने मर्जर कर लिया, दे हैव जॉइंड देयर हैंड्स, नाउ दे बिकम वोडाफोन आइडिया। So these two company can work, they are working together, so they need to scan। तो रिलायंस जियो हमेशा स्कैनिंग करेगा मार्केट में क्या चल रहा है। now internet, nowadays internet is the most important part of your life। इंटरनेट नहीं होगा आपके फोन में ना तो आप पागल हो जाओगे। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आपके फोन में इंटरनेट बंद हो जाएगा ना, आप पागल हो जाओगे। and for by understanding this reason what is happening with the covid, रिलायंस जियो ने फाइबर केबल, फाइबर इंटरनेट चालू कर दिए हैं। तो हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज टू दी कंपनीज। अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन लिया, 800 रुपया 1000 रुपये का आपने लिया, तो आपको जीबी के स्पीड में आपको अच्छा खासा इंटरनेट सप्लाई मिलेगा। if your internet will stop now, you will go mad। So how, this is how they monitor, how this company monitor, they forecast what is happening in a market, what should we do, what the new thing we should understand with the help of organizations, everything this such kind of companies study and they forecast, and at the end they do assessment। the most important thing is assessment ki baba iska क्या एंड होगा, इसका इसका हमको आउटपुट क्या मिलेगा, वी शुड विल बी गेटिंग द आउटपुट, आर वी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स और नॉट। दिस कम्स अंडर योर कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्कैनिंग, monitoring, forecasting and assessing। Third, you have exploratory process। what is exploratory process? Try out new ideas, see how they are working on, explore different Okay, things। exploratory process का मतलब होता है कि what will happen in future, they need to have some exploratory view। क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या अल्टरनेटिव प्लान हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टू गेट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। दिस इज कॉल्ड योर एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। द ऑर्गेनाइजेशन डू गुड अमाउंट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या हुआ है, ऐसा नहीं क्या हो सकता है। अभी एयरटेल विल बी थिंकिंग कि भाई एक तो एक साइड में जियो है जो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन अ मार्केट, ही हैज अ ब्रांड इन अ मार्केट, अफलातून पैसा इनके पास में, कुछ उनका पैसा कमी नहीं है। दूसरे साइड में वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया अकेला तो फाइट नहीं कर पाता, अभी जॉइंटली है, लोग दोनों जॉइंटली फाइट करेंगे। सो एयरटेल नीड टू डू गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेटेजी, दे नीड टू फाइंड आउट कि बाबा फ्यूचर में क्या करूं मैं, what new strategies should I implement in a market, what should I do कि सारे एयरटेल के कस्टमर्स मेरे पास रिटेन रहें and the new customers should come towards me। so this is how they think कि ये हम लोग करते, this would be a rational thinking। okay, what future choices can be made available for the employees, that's come under your exploratory process। understood? okay, any doubt in this? No, sir। okay, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग हमने 2 पॉइंट तो यहाँ पे कवर कर लिया, कंटिन्यूस प्रोसेस और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। थर्ड, यू हैव यूजफुल एक्सरसाइज। व्हाट इज यूजफुल एक्सरसाइज? एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑलवेज कंडक्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये एक्सरसाइज हमेशा कंपनीज बनाती है, फॉलो करती है। द पर्पस ऑफ doing this exercise
is to find out threats. Which company is the biggest threat for us? What is happening in the market? हमको हमारा जो थ्रेट है या हमको हमारा जो बड़ा कॉम्पिटिटर है उनको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद the company also need to find out what is the current situation of economics in India, what is the current situation of economics in America, okay, in Japan, in China, in Germany, in Russia. वहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे इनका बिजनेस सेटअप है वहाँ वहाँ के थ्रेट्स क्या है, वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होंगे, वहाँ पे सोशल फैक्टर्स क्या होंगे. एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. See, when you talk about like MNCs, it is a multinational corporation. Whenever they have a business in different countries, तो different countries का जो pestle है, that is जो political, economical, social, technological, legal, ये सारे अपने अपने कंट्री के इंडिपेंडेंट वे पे काम करते हैं. जर्मनी का पॉलिटिकल फैक्टर टोटली डिफरेंट होगा अमेरिका से, अमेरिका पॉलिटिकल फैक्टर टोटली डिफरेंट होगा यूरोप से. So the company has to study, has to do analysis of every country independently. And wherever they find कि बाबा इनका threat ज़्यादा है, तो they need to nullify that threat. They need to find out a solution so that they can reduce that threat to zero. That's why environmental study, the environmental scanning is important. जब तक आप मार्केट को पढ़ोगे नहीं, मार्केट को स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे. स्ट्रैटेजी कभी भी हवा में नहीं बनती. You need to do a deep study, a homework that needs to be completely done before formulating the strategies into the organizations. So it is one of the useful exercise. Fourth, utilize opportunities. As I said earlier, you really has an opportunities. Wherever you find opportunities in a market, in a business, utilize it immediately. अगर आपके पास अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट है, यू हैव द प्लान, यू हैव द, अभी जियो का मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है. ओके, अभी जियो मार्ट भी आ गया, ऑलरेडी डी मार्ट है, पटेल स्टोर है, बिग बाजार है, सब कुछ है. अभी इसमें इन्होंने जियो मार्ट भी डाल दिया. तो सी हाउ ग्रेजुअली एंड फास्टली रिलायंस इज कैप्चरिंग इंडस्ट्रीज. दे एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्रीज. हर एक इंडस्ट्री में वो अपना हाथ डाल रहे हैं. अभी बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री बचा है जहाँ पे रिलायंस नहीं है. रिलायंस अगले 10 साल में विल बिकम वन ऑफ द जाइंट ऑर्गेनाइजेशन. जाइंट मतलब इतना बड़ा ब्रांड हो जाएगा, इतना बड़ी कंपनी हो जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे. Because the way they are acquiring things, the way they entering into the industries, it is super duper fast. So they are taking the what you say advantage of the opportunities. Now Jio Mart आ गया, उनको अभी क्या है, उनको पैसा बहुत पड़ा है, तो वो अच्छा सस्ते दाम में दे रहे हैं, लोगों का भरोसा आराम से कर ले रहे हैं. एक बार आपका भरोसा हो गया ना किसी चीज पे, तो लोग किसी और चीज पे नहीं जाते. Why you can see huge amount of rush in DMart? Because बिग बाजार में थोड़ा महंगा मिलता है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन डीमार्ट में कैन फाइंड थोड़ा सस्ता. लोग बोलते रहे 1000 का चीज है 250 मिल रहा है, लेकिन वो 250 का डिस्काउंट है, 800 या 750 मिल रहा है. बट द पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड. अगर आप डीमार्ट में गए हो ना, तो वो एक चीज खरीद के नहीं आओगे, आप जाओगे 500 पीस खरीदने और 5000 खर्चा करके आओगे. दिस इज हाउ द एडवर्टीजमेंट, द अपॉर्चुनिटीज का यूटिलाइज होता है. नाउ गो टू डीमार्ट, यू विल फाइंड एवरीथिंग एट वन शॉप. एक स्टॉप पे आपको सारा चीज मिलेगा, फ्रॉम वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इन डीमार्ट. Okay, so this is how they always find out the utilization of the opportunities available in the market. Social acceptance. Social acceptance क्या होगा? What is social acceptance? If your product is being accepted by the community or the customers, और या Okay, फिर how the community will view the product once it is launched, कैसा उसका reaction है. okay.
Anything else? See, whenever you say, okay, I guess Sarthak has rightly pointed out that thing. Social acceptance, matlab whatever goods and services are there, okay, it needs to be accepted by the consumer. You need to be accepted by the customers. Okay, the difference between a customer and a consumer: the customer who just purchased that product, the consumer who consume that product. Okay, so importantly लोगों ने वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है. जब तक आपका प्रोडक्ट सोशली एक्सेप्ट नहीं होता या कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आपके स्ट्रेटेजीज का कोई भी मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, आपने पेप्सी का बॉटल अच्छा शेप में डाल दिया, उसके डिजाइन अपने अच्छा कर लिया, उसका जो स्टिकर है वो अच्छा बना लिया, आपने बोला एक पेप्सी पे पेप्सी फ्री है, एवरीथिंग, बट व्हेन यू टेस्ट दैट पेप्सी, इट इज नॉट एज गुड एज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड. आपको लग रहा था कि स्वीट होगा, थोड़ा सा सोडा ज़्यादा होगा, ओके, इट विल रिफ्रेश यू, लेकिन उसका कुछ टैंगी फ्लेवर है या थोड़ा तीखा फ्लेवर है, तो वॉट एवर द फ्लेवर ऑफ अ पेप्सी, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल. So the social acceptance should always there, then only you can win over to the competitors. So strategy formulation के वक्त में whatever product and services you are forming, it needs should be socially accepted, it needs to be consumer oriented. जब तक आपके प्रोडक्ट्स कंज्यूमर परचेस नहीं करेंगे, सोसाइटी परचेस नहीं करेगी, तब तक आपके प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में. आपका प्रोडक्ट ऐसे ही पड़ा होगा. If no one is gonna purchasing your product, there is no value. So whenever you make the strategies, you have to make sure that it needs to be accepted by the consumers. Then you have adopt forecasting. ये हमने पहले भी किया है. You need to forecast the business, you need to understand the business, you need to monitor, you need to focus, you need to study the market, and you need to assess the environment. फोरकास्टिंग करो कि मार्केट में क्या होगा, हम हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद वो काम करेगा नहीं करेगा, कितना काम करेगा, कैसे काम करेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट. Monitoring the market, monitoring the business, how the market is going up and down. Okay, what should we do changes with our goods and services, what is happening in a market currently, that will come under your adopting monitoring. Assessment means the result, the output. We should do assessment part कि हमने जो किया, हमने जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किया, वो सच में काम किया कि नहीं किया, या काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, उसका हमको एक असेसमेंट का जरूरत है. So understood the importance of the environmental scanning. Yes, sir. Okay, the entire lecture is loud and clear, proper आपको सुनाई दे रहा है सब कुछ? Yes, sir. Okay, thank you. So we'll move forward with the environmental scanning, the process by which the enterprise monitor their relevant environment to identify the opportunities and threats affecting the business is known environmental scanning. Environmental scanning is basically the responsibility of a top management of a business unit or enterprise. It is most importantly, it is entire responsibility of a top executives or top management of an organization. ये कोई भी तरह का मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स किसी भी तरह का काम नहीं करते. So it is the most importantly has a responsibility of a top executives. Scanning of the environmental forces may be a continuous scanning, regular scanning or ad hoc scanning. Ad hoc scanning का मतलब होता है temporary scanning. Environmental scanning is the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decisions. The main concept of environmental scanning करने का सबसे important concept होता है to find out what are the current opportunities are there for the product and services and what are the current threats. उनको खतरा किन लोगों से है,
कौन से प्रोडक्ट से है, कौन से कंपनी से है, कौन से कॉम्पिटिटर से, दैट नीड्स टू बी फाइंड आउट and then they should go for a strategic decisions. Okay, now why we need the environmental scanning, the need for environmental scanning? First, you need to identify strength, the strength of an organization. अगर मैंने आपको पहले भी बोला था कि strength का मतलब होता है कि कंपनी की ताकत. What is the strength of an organization? कि हमारे पास पैसा है. एग्जाम्पल रिलायंस अगर लोगे तो अच्छा खासा इतना पैसा इनके पास है कि क्या बोलो, उनका सिर्फ घर देख के ही आप लोग एनालाइज कर सकते हो. Sir, Okay, also Reliance is debt free. यस इट इज अ डेट फ्री. बट अभी ये तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन अंदर की बात पता नहीं अपने को है कैसा है, अभी उनको ही पता. तो बट इन मुंबई कि इतना बड़ा घर किसी भी एंटरप्रेन्योर का नहीं है. माइट बी महाराष्ट्र के बाहर या मुंबई के बाहर होगा, रतन टाटा का जमशेदपुर में वगैरह में होगा घर, बड़ा बड़ा मैंशन वगैरह होगा. बट बॉम्बे जैसे सिटी में इतना बड़ा घर सिर्फ 5 लोगों के लिए, देयर ओनली मुकेश अंबानी, उसकी वाइफ, 2 बच्चे और एक बहू, 5 लोगों के लिए इतना बड़ा घर, क्या जरूरत है? बट मनी, दे हैव मनी. अगर घर के लिए इतना पैसा, जस्ट अ मोमेंट. Most importantly, when this Reliance organization can keep huge money for their organization, for their home, सोचो उनके पास कितना पैसा होगा. जितना मुझे पता है, what I have studied, they almost have 150, 1.5 लाख करोड़ उनके पास है. Almost what I have understood, what I have studied, almost 1.5 lakh crores Mukesh Ambani has have currently. So he is moving to capture lots of new industries, new businesses. So he knows his strength. He has huge money. He has name. He has good amount of contacts. Okay, उनका अच्छा खासा brand name है. तो he has strength. Weaknesses as of now, मैंने बोला जैसे weaknesses तो कुछ दिखाई दे नहीं रहे इन लोग के, but other companies may have their weaknesses. For example, कोई छोटा मोटा brand है, Oppo, Vivo ले लो, still not good brand. Okay, they doesn't have good captured or hold in India, या कोई दूसरे कंट्री में उनका होल्ड इतना अच्छा नहीं होगा. The durability of this Oppo Vivo phone is not good. जितना मुझे पता है कि वो इतना खास फोन है नहीं, बट आई डोंट नो, जो यूटिलाइज करते हैं उनको पता होगा. तो वो उनका वीकनेसेस माइट भी हो सकता है. Identification of an opportunity, if you talk about like Oppo Vivo, कि Oppo Vivo really has an opportunity कि वो अपने प्रोडक्ट को लेके बेहतरीन कर सकते हैं. ओके, वो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि भाई मार्केट में हमारा अच्छा खासा नाम है, हम सब कुछ है, तो वी हैव अपॉर्चुनिटी. सो शुड वी गो फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सो वी कैन मेक श्योर दैट कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा खासा बेहतरीन हम बना सकते हैं इसको. So they have that opportunities with them. Threats, yes, if you talk about like Oppo, Vivo, they have n numbers of competitors. Samsung सबसे बड़ा competitors. Apple की तो गिनती है नहीं, because Apple is something like for different league peoples. वो गरीब लोगों के लिए बना नहीं है फोन. उसका नॉर्मल रेंज चालू होता है लाख रुपया से, लाख रुपया 80,000 90,000 से चालू होता है. तो एज नॉर्मल पीपल या मिडिल क्लास पीपल तो उतना फोन रेयरली, मतलब बहुत रेयरली लोग लेते हैं, ऐसा है. तो जिनको अफोर्ड होता है दे गो एंड परचेस. अभी एप्पल 12 आ गया है, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, क्या छोटे मोटे सब नाम चेंज करते हैं, बट फोन दिखने में सब कुछ सेम ही होता है. यस, इट हैज अ हाई सिक्योरिटी, ओके, हाई ड्यूरेबिलिटी, very good phone. As per price, it is very nice phone, but still they have threats in the market. Samsung has wide varieties of options with them, but still have good amount of competition in the market. Then you have a survival and a growth. When you talk about a survival and a growth, you need to find out the various things कि भाई हमको मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमको क्या करना चाहिए. हमको अगर मार्केट में रहना है तो व्हाट शुड वी डू. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस 4 points, the first 4 points.
ये अगर हमने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया, वीकनेस को कम किया, अपॉर्चुनिटीज को समझा और थ्रेट्स को कम किया, तो हम लोग मार्केट में सर्वाइव भी रहेंगे और हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा. So if you really want to survive in a market and you need to grow in a want to growth in an organization, the first 4 points पे आपको काम करना पड़ेगा. You have to work on first 4 points. Then you have optimum use of resources. Whenever you do environmental scanning, whatever resources, now resources का मतलब होता है scarce resources. If your company is a manufacturing unit, so petrol, diesel, gas, जो भी आपको रहेगा उसका पूरा इस्तेमाल करो. You have capital, you have finance, utilize in proper way. Human resource, one of the asset of an organization. You have high technological machines in a company, you have a plant and machinery, land and building. जितने भी आपके रिसोर्सेज आपके पास है उसका 100% यूटिलाइज करो. निचोड़ के ले लो आप उसके सारे रिसोर्सेज. आपने अगर अपने रिसोर्सेज निचोड़ के ले लिए तो आपको उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा. If you are having a resources and if you're not utilizing it in a proper way, you will not get the output. So whenever you do scanning, you make sure that whatever resources are there, it needs to be optimally used, properly used, एकदम proper, एकदम निचोड़ के आप ले लो. That's why ना कि the Indian employees are working 12 hours a day. एक दिन में 12-12 घंटे, 11-11 घंटे काम कर रहे सारे लोग. वर्क फ्रॉम होम लोगों को लग रहा है कि सिंपल है, बट नहीं, वर्क फ्रॉम इज मच मोर डिफिकल्ट रादर देन गोइंग टू ऑफिस. घर बैठ के आपको 10 बजे का लॉगिन दिखाना पड़ता है और रात को 10 तक आप काम ही करते रहते हो. सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग हैपेंस इन वर्क फ्रॉम होम. सो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं घर से, उनको इतना निचोड़ के ले रहे हैं कि यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. जिनके फादर या मदर प्राइवेट में काम कर रहे हैं, दोज पीपल्स आर वर्किंग ऑन व्हाट यू से एक्सेल पे काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिनके फादर मतलब घर से काम करते हैं, दे कैन सी आपके सामने ही होगा सारा चीज. Then plan business strategies. Yes, you need to do a planning for business strategies. Whatever business strategies need to form in an organization, उसका एक आपको separately planning करना पड़ेगा. Okay, planning के बाद you can understand कि which strategies can be utilized for an organization, which strategy can be used in a proper way. Then you have a decision making. You need to decide how whatever after understanding the various strategies you have formed, almost you have formed 5 to 6 strategies. You have to make the decisions which strategy currently is best as per the environmental scanning. environmental scanning करने के बाद आपको मालूम होता है कि हमारा कौन सा स्ट्रेटेजी इसमें से काम करेगा. The company has to make that decisions. That's why decision making is important. Then reliable forecasting. Normal, not the accurate. फोरकास्टिंग हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है. एक नॉर्मल फोरकास्टिंग आप कर सकते हो या नॉर्मल आप उसको एक व्हाट यू से 80 to 90% आप उसको सोच के समझ के एक फोरकास्ट कर सकते हो. रिलायबल फोरकास्टिंग कैन ऑलवेज बी डन. ओके, वो कितना हेल्पफुल करेगा, कितना काम करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, बट यू कैन जस्ट पुट बाबा मैथ सेक्शन बोल रहा है कि ये चेंजेस हमको हमारे स्ट्रेटेजीज में करना चाहिए. सो रिलायबल फोरकास्ट इज इम्पोर्टेंट. सक्सेसफुल ऑपरेशंस. वंस द एंटायर थिंग इज डन, ओके, देयर कैन यू कैन इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज या सक्सेसफुल ऑपरेशन आप उसमें कर सकते हो. But again, the previous point say reliable focus. So your forecasting will not be accurate, but more or less it would be 80 to 90% आपका सच हो सकता है. So on the base of that, आपके operations या आपका जो implementation of strategy होगा वो कारगर हो सकता है या वो काम कर सकता है या work कर सकता है. So successful operations can be things. This strategies, whatever the company make, after studying the environmental scanning, it will surely cut down the unwanted things of an organization. जो भी अनवांटेड थिंग्स है या अनप्रोडक्टिव थिंग्स है कंपनीज के, वो निकाल के फेंक सकती है, उसको रेड्यूस कर सकती है. जब भी आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, जब भी अच्छा खासा स्कैनिंग करोगे, आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, आप
अनवांटेड वेस्टेजेस आपके कम हो जाएंगे, एंड व्हेन यू रिड्यूस द अनवांटेड वेस्टेजेस द कंपनी प्रॉफिट मार्जिन हैज ऑलवेज इंक्रीज। ये हमेशा कंपनी सोचती है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम लोग प्रोडक्शन से नहीं कमाते, वो तो आपका है ही प्रॉफिट, बट whenever you do unwanted wastages into the organization, अगर वो भी कम करोगे तो भी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है। So this will come under your successful operations. Understood these points? Needs for environmental scanning. Yes. Any doubt in this? No, sir, no doubts. Okay, easy to understand na properly, na no problem na. Yes, sir, yes. Okay, so just go through this slide. SWOT analysis: strength, weakness, opportunities, and threats. When you talk about like SWOT analysis, it is the internal environment and it is your external environment. जब भी आप SWOT analysis की बात करते हो तो इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आते हैं। जितने भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं वो कंपनी के अंदर होते हैं। ओके, इट इज इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। whenever I talk the internal environment always in a control of a company. आप आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो अगर कम है तो, और आपकी वीकनेसेस कम कर सकते हो अगर ज्यादा है तो। Second, the external environment, that is your opportunities and threat, which is beyond the control of an organization. Opportunities and threats आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं. So you need to understand the various opportunities which is there in a market and various threats in a market, and then you have to reduce that threats and you have to take the advantage of the opportunities. So this is the strength and weakness of Toyota. एक टोयोटा का SWOT एनालिसिस है यहाँ पे। उनका स्ट्रेंथ है ट्रस्टेड ब्रांड है वो। कैमरी ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार ऑन द मार्केट। मिड रेंज व्हीकल है यहाँ पे। 2007 फैमिली सेडान कार ऑफ द ईयर उसको वहाँ पे अवार्ड में मिला था। हाई माइल्स पर गैलन का उसका स्ट्रेंथ है। drives like a regular sedan and innovative. This is one of the strength of Toyota. उनका वीकनेस देखो क्या है यहाँ पे। इनिशियल हायर इनिशियल कॉस्ट, द व्हीकल एज अ हायर कॉस्ट, फॉरेन कंपनी लूसेस द अमेरिकन लॉयल्टी कंज्यूमर, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उनका अच्छा खासा वीकनेस है। टाइट हेडरूम, नॉट अ हाई परफॉर्मेंस व्हीकल एज अपोज टू अकॉर्ड। जो अकॉर्ड है होंडा की, उसके कंपेयर में उसका परफॉर्मेंस बेहतरीन नहीं है। सेविंग कुड टेक ईयर्स, पे बैक लॉन्गर, टारगेट मिडिल एज अमेरिकन। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी इनका वीकनेस है टोयोटा का। Now whatever the opportunities they are having, future of the automotive industries, people are increasingly concerned with the environment, especially youth. Pricing gas prices, foreign oil dependency, government subsidies. अभी देख लो आपकी फ्यूल का प्राइस इतना बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, तो टाटा एज कम विद द ईवी व्हीकल, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ओके, इंडिया में आई डोंट नो कि हाउ इफेक्टिवली दिस व्हीकल कैन वर्क, क्योंकि हमारे पास स्पेशली इन बॉम्बे में यू हैव अ ह्यूज ट्रैफिक। I personally cannot basically is pro with this kind of electrical vehicles, क्योंकि हमारा मोबाइल का ही बैटरी इतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो व्हीकल का बैटरी कितना टाइम, अगर हम ट्रैफिक में फंस गए कहीं पे तो कितना टाइम वो बैकअप देगा हमको। डीजल पेट्रोल के बेसिस पे कैसा कि आपने टंकी फुल कर दी या 1000 का पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, तो यू हैव अश्योर्ड कि भाई तेरी गाड़ी जाएगी, घर तक तो आप जा सकते हैं या 40-50 किलोमीटर आप जा सकते हो। What about the electrical vehicle? What is the durability of the electrical vehicle? So this is the challenges which comes in things. Okay, so this is how the electrical vehicles का problem है। Okay, threats, hypercar, people aren't ready for switch to hybrid vehicles. पहले ये तो जुना स्लाइड है, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए पहले लोग इतना कन्वर्ट नहीं होते थे, जो पेट्रोल से कन्वर्ट होके डायरेक्टली बैटरी पे चली जाती थी। बट अभी तो सारे जो व्हीकल्स आए वो स्मार्ट व्हीकल्स हैं एंड दे आर हाइब्रिड इन टर्म्स, constantly creating a better technology. Some feels adversely towards hybrid techs, continuous maintenance.
So the vehicle has a huge maintenance. This is a threat for the organizations. So this is an example, a small example of a SWOT analysis. अभी तो नए वाले भी आए होंगे. That needs to be checked. So this is the same thing which have studied from last 2 points जो हमने पहले पढ़ा है. ये एक आप go through कर लीजिए. अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो I'll explain that point. कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है आपको? Any point which is not understand by you? Okay. Advantages भी एक बार देख लीजिए आप. What is the advantage of SWOT analysis? This is all points we are doing from first slide. इसको सिर्फ उसको अलग अलग तरीके से they have done, but this is the almost same points which we have studied earlier. Capitalize on your strength, win over your weaknesses, benefit from the opportunities, correct visualization, that is your forecasting, improvement in a business whenever you implement good amount of strategies, so it will give you good amount of reward back. Future orientation, that is your forecasting, you can always look for forecasting, provides alternative choice. Whenever you have 4 to 5 different kinds of choice available with you, you can go with the best available choice which you have. Understanding? Yes, sir. Okay. Anything which you didn't understand? Easy to understand the concepts? Yes. Yes, sir. Okay, so we'll stop here now for today. आज 11 साइड हमने complete किया. It is not a small part. Okay. So can we get lecture tomorrow, if possible? कल already 2 lectures अगर है, possible है तो ऐसा कोई compulsion नहीं है. Sir, in the अगर morning we have 2 lectures, then we have finance specialization lecture of Radha ma'am. नहीं बहुत हो जाएगा तुम लोग के लिए. जाने दो फिर रहने दो. We can see on Friday. अगर हो सके तो फ्राइडे हम लोग लिखेंगे. अगर आप लोग का कन्वीनियंस होगा तो विल टेक ऑन फ्राइडे. I think Friday को possible है. I'll be in touch with you. श्योर. सार्थक आप मुझे बता दो अगर होगा तो आपसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग लेक्चर कंडक्ट कर लेंगे. नो प्रॉब्लम. Yes. ओके, ठीक है. सो विल स्टॉप हियर नाउ. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. Thank you, sir. Have a good day ahead. Yeah, have a good day. Same to you. Bye bye.